Now another classification we have one dimensional, ठीक है, टू dimensional and थ्री dimensional flow. ठीक है, वन dimensional, टू dimensional and थ्री dimensional flow. Now this classification of flow is based on one term that we call as streamline. ठीक है, स्ट्रीमलाइन को मैं अभी आगे चल के डिफाइन करूंगा. ठीक है, स्ट्रीमलाइन के बेस पे यू कैन से दैट टाइप ऑफ फ्लो इज आइदर वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल और थ्री डिमेंशनल. ठीक है. नाउ स्ट्रीमलाइन, इफ दैट स्ट्रीमलाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है. ठीक है, इट मे बी a curve which you can represent it on two dimensional diagram. ठीक है, और it may be a curve in space. ठीक है, लाइन को आप तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन टू डिमेंशनल फॉर्म, ए कर्व, ठीक है, अगेन ए लाइन, वी कैन रिप्रेजेंट दैट इन स्पेस. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, if streamline is a straight line, that is one dimensional flow. If streamline is a curve, that is two dimensional flow. If you represent the streamline in a three dimensional form, that becomes a three dimensional flow. Meaning is, if you have any flow flowing through a pipe, ठीक है, उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर वो स्ट्रीमलाइन एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज वन डिमेंशनल फ्लो. कर्व है, दैट इज टू डिमेंशनल फ्लो. इफ वी रिप्रेजेंट दैट लाइन इन स्पेस, दैट इज अ थ्री डिमेंशनल फ्लो. ठीक है, स्ट्रीमलाइन को मैं अभी आगे चल के थोड़ा डिफाइन करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन. ठीक है. So we have three different types of flow lines. One are the path line. ठीक है. Second one are the streamline. And one more is streak line. ठीक है, ये पाइप है हमारे पास. ठीक है, इसमें कोई पार्टिकल अगर हम ले लें, उस पार्टिकल ने इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक, ठीक है, दिस इज सेक्शन वन, दिस इज सेक्शन टू. व्हेन इट मूव्स फ्रॉम सेक्शन वन टू टू, इट टेक्स टाइम टी. ठीक है, इट इज हियर, सो आफ्टर टाइम टी इट मे बी हियर. तो इसने क्या पाथ फॉलो किया, दैट वी कॉल एज पाथ लाइन. So I define it as a path followed by a fluid particle in motion. This is a path followed by a fluid particle in motion that we call as path line. ठीक है, तो किसी भी तरह का वो पाथ हो सकता है. एक पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया, कोई दूसरा पार्टिकल यहां पे है, उसने ये पाथ फॉलो किया, थर्ड पार्टिकल उसने ये पाथ फॉलो किया. So that are the path lines. Okay. Then the third one is the streak line. Streamline को मैं बाद में डिस्कस करता हूं. The streak line. Now say we have one nozzle. ठीक है, तो इस नोजल से सिर्फ एक ही जो पार्टिकल है लिक्विड का, जहां कोई किसी भी फ्लूइड का, वो बाहर आ सकता है. ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से बाहर आया. ये जो इनिशियल पार्टिकल था वो कुछ यहां पे पहुंच गया. उसके पीछे जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे आते हुए, जैसे स्मोक किसी चिमनी से बाहर आता है, समथिंग लाइक दैट.
ठीक है. Now this is the path followed by a particle from टाइम t1 टू t2. मतलब अगर आप t1 0 से स्टार्ट किया, t2 आफ्टर 10 सेकेंड्स या आफ्टर 1 मिनट, यू से आफ्टर 1 मिनट जो इनिशियली यहां पे पार्टिकल था दैट मूव्स टू हियर, और उसको फॉलो करते हुए बाकी पार्टिकल जो है उसके पीछे आ रहे हैं. ठीक है. नाउ इफ आई ट्राई टू डिफाइन इट, आई कॉल इट एज the instantaneous picture. This is the important word here. This is the instantaneous picture. Instantaneous picture. ठीक है. Instantaneous picture of the position of all fluid particles which have passed through a given point. ठीक है. So this line we call as the streak line. So I repeat it again. The instantaneous picture of the position of all fluid particles which have passed through a given point at some previous time. At some previous time. Okay, that is the streak line. I take this one, streamline. Okay. Now first I define it. So you can say streamline. Now this is always a imaginary line. Actual में exist नहीं होगी. This is a theoretical line. Okay. Now this is the imaginary line. Okay. Drawn in the fluid in such a way that the tangent to which at any point gives the direction of motion of the particle of a particle. ठीक है. Now you see there. I said these are the streamlines. These are the streamlines. Okay. So in any instant, if fluid particles comes over here, the tendency of this particle to move along the tangential direction. So this is its velocity v. Okay. If particle is over here, its tendency is to move along either this direction or along this direction, depending upon the rotation. ठीक है. So these are the imaginary lines जिसको हम फ्लूइड फील्ड में ड्रॉ करेंगे इन सच ए वे कि टेंजेंट अगर हम वहां पे ड्रॉ करें उसके पार्टिकल्स के लिए, so that tangent gives us the motion of the particle. ठीक है. So in your syllabus you have only the definition term.